बिग डेटा एनालिटिक्स। आज के जमाने में सबसे अमीर कौन है? जिसके पास डेटा है। द वन हु हैज अ डेटा इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। नाउ प्लेइंग विद द डेटा, summarizing data, sorting data, filtering data, blending data, interpretation from the data. There are different aspects of a data. So you need to know how to present a data in a very visualized way and in a very simple way, because there are large complex databases, or there are different data sets that you get. There are different kinds of data, right? You have a boolean data, true or false types. You have different types of data, string data. Then you have discrete data, continuous data, right? And there are different categories of data: nominal, ordinal, interval, ratio types. There can be order, ranks, geographical distribution. अलग अलग टाइप के डेटा आ जाते हैं। तो अब उन डेटा के साथ हम कैसे खेलेंगे? सो हियर इज अ वेरी सिंप्लीफाइड इमेज जो आपको रिप्रेजेंट करेगी कि व्हाट डज डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स डू, लाइक टैब्ल्यू, एसक्यूएल, एडब्ल्यूएस, पावर बीआई। करते क्या है ये आखिर? क्यों, व्हाई इज इट यूजफुल? यहाँ पे डेटा है, काफी ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है। कैन यू सी? क्या किया मैंने? यूजिंग डेटा एनालिटिक्स टूल उन्हें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कोशिश करी, एंड देन फाइनली आई कैन टेक डिसीजन आउट ऑफ इट, है ना? सो वी हैव डिफरेंट टूल्स ऑफ डेटा सेट्स। वी हैव प्लॉट, वी हैव स्कैटर प्लॉट, चार्ट्स, ग्राफ्स होते हैं, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, कॉलम ग्राफ, स्टैक्ड कॉलम। देन अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं, डोनट चार्ट, ट्री मैप, नेविगेशन मैप्स, केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर चार्ट्स, कार्ड्स होते हैं। काफी अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं कोई भी डेटा सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट? सो आप इमेजेस, बैकग्राउंड एंड अलग अलग फंक्शंस होते हैं, इफ, एल्स, एंड, और, नॉट, हैविंग, कंडीशंस। अलग अलग कंडीशंस यू कैन ऐड, लाइक इफ यू वांट टू ग्रुप बाय, सॉर्ट बाय, चेंज बाय। अगर आपका कभी ऐसा लाइव डेटाबेस बनाना है, राइट, ऐसा इंटरफेस बनाना है, डैशबोर्ड, इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ डैशबोर्ड, सो अपडेशन डिलीशंस होते रहते हैं, एडिशन चेंजेस। So using this database software, you can definitely do that. What are the 4 V's of the data? So 4 V's आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर है। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेरासिटी। काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ डेटा, what is the velocity of the data, what is the veracity of data. It's very important that you are acquainted with the 4 V's. अब बिग डेटा के चैलेंजेस क्या क्या है? ऑब्वियसली द कॉस्ट। हैंडलिंग द डेटा इज रियली डिफिकल्ट एंड काफी बड़ा कॉस्ट लगता है। बैकअप ऑफ दैट डेटा, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन तो ठीक है सिक्योरिटी पर्पस के साथ, बट बैकअप का क्या? सो सेफ्टी पर्पस के साथ साथ एक बैकअप भी एक काफी बड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है। ये स्ट्रक्चरिंग, हायरार्की फॉर्म में स्ट्रक्चर करना है, और लॉजिकल बेस में व्हाट बेसिस वी हैव टू स्ट्रक्चर द डेटा, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मैनेजिंग ऑफ डेटा, राइट? सो मेनी टाइम्स वी हैव सर्टेन डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है कि हम डेटा को मैनेज करें, and then transforming that data into particular values, charts, or we can take out certain interpretations, right? So in this ppt मेजरली मैं आपको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए अलग अलग प्रमोशन टेक्निक्स है, आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटिफुली दिस पीपीटी इज बीइंग क्रिएटेड, राइट? ऑल द डिफरेंट एलिमेंट्स, सी ओवर हियर दिस स्लाइड, हाउ यू कैन जस्ट मेक योर स्लाइड्स ब्यूटिफुल। ये देखो, ये देखकर ही समझ आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा से बेसिस के। देख रहे हैं 2018-19, यू कैन सी दस। सो अगर इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट द प्रॉफिट, लॉस, एबिटा, नेट प्रॉफिट जनरेटेड, राइट? अगर आपको टर्नओवर दिखाना है, एनुअल टर्नओवर, डेप्रिसिएशन, और इफ एनीथिंग, इफ यू वांट टू सीएजीआर, राइट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीएजीआर फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर। सो देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, यू कैन जस्ट यूज दिस एलिमेंट्स टू रिप्रेजेंट योर डेटा। सो योर प्रेजेंटेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे प्रेजेंटेशन स्किल्स के टूल ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए अलग अलग, and then I will be making a detailed video upon Power BI, Tableau and SQL maybe soon, बहुत जल्दी, once I finish my learning process, so that you also can learn more about the software, because it is very important to be intricative as well as at the same time multidisciplinary. आपको even if you are from irrespective college, SUTEX, कोई भी field से है, data is very important, and how can you play with that data is even more important, right? आप बी फार्म, एम फार्म में प्रोजेक्ट्स करते हो, क्या आता है? डेटा, एनालिटिकल वैल्यूज आती है कॉलेज में, यू विल गेट इन्फ्लेमेटरी वैल्यूज है, कोई भी एसेस। सुटेक्स में यू हैव फॉर्मूला टेबल्स एंड ऑल। व्हाट इज ऑल दैट? डेटा। सब डेटा ही तो है। सी हाउ ब्यूटीफुली आई एम गोइंग टू शो यू 20 to 30 स्लाइड्स अलग अलग रिप्रेजेंटेशन की, कैसे उन्होंने, ये देखिए, सी हाउ ब्यूटीफुली दे हैव like linked things. If you want to link things, right, so there are different smart art of course in PowerPoint, but instead you can use it's here
what is the difference between the BI, that is business intelligence, BA, business analytics, data analytics, and the big data. So see, these are the different kinds of analysis. अगर मैं analysis की बात करूँ तो हमारे पास 4 types of analysis होता है: descriptive, diagnostic, predictive, and prescriptive. Prescriptive is like a more value added basically, and it has a high complexity, and it encompasses a lot of predictive, diagnostic, descriptive. जैसे TAM SAM टोटल एड्रेसेबल मार्केट, ऑब्जर्वेबल एड्रेसेबल मार्केट है ना, टैम सैमसंग. सो कैसे एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं कंपोनेंट्स रहते हैं, सर्विसेबल, अवेलेबल मार्केट एंड ऑल, ऑब्जर्वेबल मार्केट. सो ये ऐसे, दीज आर द पर्टिकुलर चार्ट्स और एनालिटिकल थिंग्स दैट यू मस्ट नो. देन इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट कोई लेवल्स है तो आप ऐसे लेवल्स के साथ कर सकते हो, राइट? बिजनेस एडॉप्शन, एंटरप्राइज एडॉप्शन, टेक्निकल एडॉप्शन. जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इफ यू वांट टू शो, यू कैन शो द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, stationary phase, and then finally the decline of the company. So see how you can break down things. It's very easy to break down things, but the only thing is you need to be well versed with the tools. आज आप चुटकी बजा के कोई भी काम कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि गामा एआई से पावर पॉइंट बनानी है, चैट जीपीटी, जेमिनी, लाइनर, परप्लेक्सिटी से डेटा लेना है, कैसे उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So this is how the things are to be dealt with, right? And these are all techniques and different representations. मैं आपको ये slides इसलिए दिखा रहा हूँ so that आपको representation के ideas आए कि हाँ भाई, जैसे अब आपको कुछ दिखाना है तो आप ऐसे अलग अलग, just you can link network it. So आप network max भी create कर सकते हो, काफी मतलब वो भी आजकल आप मतलब चल ही रहे काफी. So that also all you can do. You can add splicers, slicers, है ना, अलग अलग dashboards पे होते हैं, आपने देखा होगा slicers and all. You can add those. You can add drill down, drill up, drill through option, drop down menus, है ना, बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो. डेटा, डेटा क्या क्या होता है? वेलोसिटी, वेरिएबिलिटी, वॉल्यूम, वैल्यू, स्मार्ट डेटा. सो आपको डेटा को अलग अलग एस्पेक्ट से करना है, कभी वॉल्यूम के बेसिस पे, कभी वेरिएबिलिटी के बेसिस पे, कभी यू हैव टू वॉल्यूम के बेसिस पे. सो देयर आर डिफरेंट डिस्टिंग्विशिंग और सेग्रीगेशन फैक्टर्स फॉर अ डेटा, करेक्ट? So see, ऐसे कैसे अगर आपको कोई timeline दिखानी, if you want to show the history, or if you want to show the timeline, you can just make use of this particular um, template and all, right? There's a geographical maps होते हैं, so अलग अलग, if you want to represent of which, what is the contribution, market share, or what are the globalized market leaders, or you can have a chart like this, है ना, or you can have a quadrant chart as well, है ना, product map, product positioning map बोलते हैं उसको, ऐसे अलग अलग maps होते हैं, like which is a giant product, अगर कोई एक छोटा मोटा competitor है. So competitive intelligence, CI, is also very important part of learning, correct? So these are all representation techniques. See how beautifully this template has been designed. See कैसे अलग अलग techniques से आप देख सकते हो. The 4 E's of big data informatics: education of the data. You must be well educated that what is your data. मतलब data usually unfiltered or uncleared आता है. You need to filter. काफी बार there are duplicate values. You can remove those duplicate values, duplicate entries. Exploring what are the different ways in which you can represent the data so that वो easy अच्छे से लगे. Contour plot or is there any other plot as well. Engaging the audience. इस डेटा से आप एंगेज कर सकते हो ऑडियंस. एंड फाइनली एग्जीक्यूटिंग, आप आगे कंपनीज brand building, image building will be promoted, because if the person who's visiting the site, he's well acquainted with the data, if the data is well visualized, well summarized, well interpreted, so obviously those things are going to be an icing on the cake, of course. Let's see, agar if you want to represent any cycle or any cascade of events occurring, see how beautifully, and see the color combinations. It's not too dull, not too subtle, not too vibrant. It's very adaptive. So you must know the color wheel. You must know the psychology, right? Of using colors, using fonts, using images, using infographics in your particular PVD. See how beautifully over here they're representing percentage or ratio, or people suffering, if you want to represent mortality, morbidity, prevalence. है ना? If you want to see that which is the contribution of which particular elements, you can add here different parts of the country. See how beautifully over here they have represented the data. So this is why I had made this video, so that you become well acquainted with all the terminologies: data security, data safety, data management, data transformation, data blending, data visualization, data summarization, data sorting, data filtering. There are a lot of data terms: data amalgamation, data merging, है ना? So blend in, blend out, all those things you need to know. Structured data,
you get a very unstructured data. It's very important that you structure that data in a very apt way. So all this is very important for us to know, right? So these are again all representation techniques. These are the hierarchy triangles. Like we have Maslow's triangle, food pyramid, and all, right? वो सारे क्या है? Triangles है. So something you can represent by triangle or a pyramid types. So yeah, that's it for today's video. I hope this video was insightful for all of you all, and definitely आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा. Do like, share, subscribe my channel, because more such amazing databases and data knowledge I'm going to impart within you, and I hope that I bring a lot of new things to the table and make you familiarize with the new terminologies. So that's it for today's video. Thank you so much for watching.